So hello guys, welcome to the session. And in this session, we are going to you all know a cat is there, and we have only 175 days left. Agree? So most of the students, those who are going to prepare for a cat 2024, they are right now confused and they are in the dilemma what to do. Like, is it a sufficient time or not? Or do I have to complete my syllabus or start a mock? So today we are going to solve all these questions, and today we have the student who have cracked a cat 2023 exam. We have Anirudh, we have Mayank, we have Bhumi, and we have Satya. Okay, and they are going to guide you like about they're going to solve all the questions related to a cat examination, and they will guide you throughout what you have to do, pursue, how to pursue. And these are the questions we are going to solve today. Those who are in the live chat box, so I would recommend you all guys to just put your question, your doubts in a chat box. We will try to solve it. Before we go ahead, we want to start with a introduction part. So can start with your intro, let them know who you are and from where you're going and what you scored, how your journey is. So have just take a brief intro about you. So yeah. My name is Satya Saran. I'm from Prayagraj. I do a lot of things. Script writing is one of them, and I used to prepare for CAT. That was also one of them. I scored 97.61 in CAT, 97.28 in ZAT, 98.5 in SNAP, and 246 in NMAT. So let's say I had a very good guidance and a very good bunch of teachers who helped me achieve all these excellent results, good results. So initially I had a convert from SCMHRD, but then I converted IIT Roorkee. So I left SCMHRD and I'm going to IIT Roorkee July this year. Yeah, that's great, Satya. Yeah, Nirud. So I'm a BCom graduate from Rajasthan, and I'm also a CFA and FRM student. A good mentoring and a good study schedule helped me secure 98 percentile in CAT, 97 percentile in SNAP, and a score of 254 in NMAT. And I had converts from colleges like MDI Gurgaon, IIM Indore, and IIM Ranchi. I'll be joining IIM Indore. Thank you. That's great, Nirud. And yeah, I think you were going to guide people in a very well manner, like you are from a non-engineer. And I think Satya is also non-engineer. So today we have all Yes. the non-engineers here. I'm a BS. So those who have a dilemma, yeah, like there is a question. I am from non-engineer background, and how I should score a good percentile in quant. So I think this video is helpful to them, and your guys going to guide them very well. So what about you, Mayank? Yes, as introduced by Sumit, my name is Mayan Kumar Singh and I am from Assam. And I am also a BCom graduate and passed GATE 2023 with 97.11 percentile. And I am joining IIM Jammu in the healthcare management program. With the help of this great mentorship, I scored from 75 percentile to 96 percentile. Most of the time, students feel like the complexity that once they have scored low, they are not going to better their score. So yes, there is chances, and how it happens is going to guide you in a very well manner. Now I'm audible? Yeah, you're perfectly Okay, so audible. yes. So I'll reintroduce myself. So the name has already been taken. I am a BCom graduate. I have completed my graduation in 2023. I have scored 96.92 percentile in CAT 2023, and I have joined IIM Rohtak this year. Like the joining is near. I have done my graduation from the same city only, which is Agra, which I live in. And apart from that, in my 12th, my percentage was 90 point something, and in 12th it was 95.3. And in the graduation it was low, it is 66% something. So मैं आप लोगों को मतलब बताना चाहूंगी कि अगर ग्रेजुएशन में भी परसेंटेज कम होते हैं तभी आप कैट के थ्रू किसी भी कॉलेज को क्रैक कर सकते हो. It all depends on your hard work that you do when you are preparing for the exam that you are going through. As I told you, तो आज तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एंड जो नॉन ईयर्स है उनके तो फायदा ही है वीडियो में. So yeah, let's start with there is a first question to all of them, and they are asking in the groups also. Is it a sufficient time, or they are like अभी समय चला गया?
कि नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहे. तो व्हाट इज योर टेक, अनिरुद्ध, सत्या? I'd like to go ahead. People who are, getting a little anxious that 175 days are not enough. As long as you're dedicated and disciplined enough, I believe even a time frame of 90 days is enough for you to crack CAT. So 175 days is quite a good time period. You just need to start with, completing the syllabus, start giving mocks, and analyze what are your weak areas. Since time is a little too short, you need to complete this, as soon as possible, so you are able to get into the dream B school which you want to go. Okay, so in short, time तो बहुत है. Okay, and you have sufficient time, तो time का तो issue नहीं है. So अब ये question नहीं आना चाहिए कि like we don't have a lot of time. As Anirudh mentioned, 90 days was enough if you are dedicated enough to crack the exam. Motivation नहीं है तो ऐसे भी नहीं कर पाओगे. वो तो फिर 5 साल भी लगा तो नहीं होगा, right? And there is a question in also the second question is, क्या syllabus complete करूँ या mock start करूँ? So I can answer that. Actually, last year I was in the same dilemma around this the same period. So what we have to do is first we have to understand the structure of the CAT exam. We only have to solve 50% of the questions to get 99 percentile, and to do that we don't need to complete the entire syllabus, let's say, wholeheartedly. We just have to know what are the easy questions that can come out of all the chapters that are there in the syllabus, and we have to focus on answering the easy questions that come in the exam. So is it necessary to complete the syllabus in the traditional sense where you are the master of all the areas in the subject? No. But is it necessary to know some things about each of the subjects so that you can solve the easy questions that come onto your screen on the D-Day? Yes, that is definitely true. You have to know some amount of, let's say, things in all the subjects, all the fields, so that you can solve the easy questions. एंड इवन आई वुड लाइक टू ऐड कि जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर ही पाओगे एग्जाम में. तो सिलेबस कंप्लीट करना इसकी गारंटी नहीं देता है. हाँ, बट आप अगर सिलेबस कंप्लीट करके जाते हो और अब ज्यादा से ज्यादा मॉक्स अटेंड करते हो तो वहां पे पता चल जाता है कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है, तो किस पार्ट में आपको खेलना है एग्जाम में बैठ के. तो इट इज मोर लाइक एनालाइजिंग द मॉक्स इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग बिहाइंड द सिलेबस और गोइंग बिहाइंड गिविंग वन एंड वन मॉक्स. आप उसको मॉक दो, फिर एनालाइज करो, पता करो आपका कौन सा जोन है और उस जोन में खेलना है. In my opinion, I don't think so कि that one portion can give you the whole success, because जरूरी नहीं है कि अर्थमेटिक के अंदर से सारे easy questions आ जाए, क्योंकि अगर हम अर्थमेटिक पे डिपेंड होकर जाएंगे we'll prepare it wholeheartedly, but जरूरी नहीं है कि उसमें से easy questions ही आए. तो in my opinion कि आप लोगों को सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, not at the level 3 but at least at level 2, so that if the question arises in the exam that you are able to solve that question. शायद पूरा ना हो लेकिन एटलीस्ट कुछ हो जाए, बिकॉज अगर 50 to 60% भी, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स, then we are able to score above 95-98 percentile, which is good enough if you want to take the whole percentile to 99 plus. So I think सारा syllabus करना जरूरी है, but at the level 1 or 2 in which you are comfortable. Agree. I also agree with that. You should know the basic of the all part. But yeah, अगर कुछ नहीं आता तो yeah, it is okay to skip something. Like there are people like I was also a aspirant once. तो मैं तो geometry तो पूरा छोड़ देता. I know the basic some questions are able to solve some basic question like a triangle से कुछ हो गया easy सा. So I know some basic, but yeah, if I'm not comfortable, I would recommend you can skip. But you should know the basic like arithmetic, algebra. That's what I'm saying. Algebra तो छोड़ना नहीं. नॉन इंजीनियर का सबसे बड़ा फियर है algebra. What you guys say कि algebra तो कोई I think algebra मतलब एक से let me speak first. algebra मेरा भी बहुत ज्यादा वीक था क्योंकि मैं भी एक नॉन इंजीनियर हूँ, तो उस रिगार्डिंग काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, पर मैंने थोड़े बेसिक्स वगैरह करे थे एग्जाम के अंदर. आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम algebra एंड आई वाज सपोज्ड टू सॉल्व आई थिंक 4 to 5 जो मैंने अपना एस्टिमेशन लगाया था, बट मैं नहीं कर पाई थी. आई थिंक 2 या 3 करे थे जो कि शायद सही गए थे, but at the same time पढ़ के जाना is important. Rest you can say. Moreover, I'd like to add that algebra can be, let's say, one of the best fields in mathematics in the CAT exam, because it is simple. In arithmetic, you will have that person A went north, then east, then west, and then he picked up a bucket, he filled it half, then let's say emptied it. But in algebra, the question is straight. It is x square minus x plus 4 is equal to 0. You see it, you put your pen on the paper, try to solve it for 5 seconds, 10 seconds, you know that whether you will be able to solve it or not.
So that's why algebra, you have to know the basic stuff, but don't be so afraid of it, because you will absolutely be sure that you will be able to solve it or not solve it, and you will be able to strategize more efficiently during your exams. So you should not be afraid of algebra, even if you're not in knowledge. हाँ एंड Okay. इवन मेरे साथ तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गया था कि 2023 पेपर में पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट हुआ है स्लॉट वन में। ठीक है, और वो क्वेश्चन एलजेब्रा का था। तो आप एलजेब्रा करके जा रहे हो तो ऐसा है कि वो बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा। एरिथमेटिक में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेटर अवेलेबल जो रहता है वो कोई काम का नहीं होता है, वो आप यूज नहीं कर सकते। तो ज्योमेट्री में आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। बट एलजेब्रा एक ऐसा ब्रांच पार्ट है जिसमें अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन का, तो आप उनके क्वेश्चंस को अप्रोच भी कर पाओगे और जल्दी सॉल्व भी कर पाओगे। सो यस, it helps to lift the marks. Okay. So summarizing the QA part, like what I understood and जो मैं बोलता अभी सबको करने के लिए as तो मैं ये समझ रहा हूँ like those who are in a 2024, those who are preparing for 2024, simple सबको logic follow करना है. You have to go through all the basic. Once you have to go through all the basics, एक बार हो गया basic, ओके देन जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है उस पर और बेटर कमांड बनाओ, ओके सो दैट यू कैन स्कोर मोर लाइक मार्क्स इन दो सेक्शन, इवन दो बिकॉज यू नो द बेसिक। अगर कोई इजी क्वेश्चन आ गया जैसे एज मैं मेंशन, अगर आप पास्ट ईयर सॉल्व करके नहीं जाओगे, आपको तो पता ही नहीं कि पास्ट ईयर कोई रिपीट भी हुआ क्वेश्चन, so that's why you should also must solve the past year papers of all cats, okay like 25 से sorry 2015 से लेके 2023 तक के आपको सॉल्व करना चाहिए, that was a must। अगर आप पहले के भी करो दैट्स ऑल्सो ग्रेट, लाइक 1999 से है तो सब करते हैं सॉल्व, एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ यू गाइस सॉल्व ऑलरेडी दोस पेपर्स, तो बेटर रहेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, अच्छा रहता रहेगा। दिस इज या लेट्स गो अहेड विद LRDI, लाइक वी आर मूविंग डाउनवर्ड, पहले QA देन LRDI, लास्ट में QARC। so what your take on LRDI guys, because it is something according to me there is no start, there is no end इन LRDI, कहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा कहीं से एंड नहीं हो रहा, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, लाइक व्हाट इज योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, हाउ यू आर गोइंग टू परस्यू, वहां से आपका लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ से पिक कर सकते हो। सो व्हाट इज योर टेक? So in my opinion, like LIDI is based on language, because अगर लैंग्वेज को आप क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो कुछ मीनिंग आप कुछ निकाल इंटरप्रेट कर लोगे, और उस वजह से पूरा सेट जो है वो मतलब पूरी मेहनत आपकी वेन में चली जाएगी। तो आई थिंक उसका इंटरप्रिटेशन इज द मस्ट, उसको आप ढंग से समझो, और वो चीज कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, दैट व्हाट द सेट इज सेइंग, सो दैट यू कैन कॉम्प्रिहेंड दैट एंड यू कैन डेफिनेटली क्रैक दो सेट। एंड LRDI में जरूरी नहीं है कि पूरा सेट बनने के बाद ही आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। समटाइम्स इट हैपेंस लाइक if we do not solve the whole set but some of the set, then we are able to solve some of the questions with the help of options or otherwise। तो आई थिंक पूरा सेट बनाने से ज्यादा ट्राई करना चाहिए आपको कि एटलीस्ट कुछ पार्ट कर सको, क्योंकि अगर आप हर सेट में कुछ कुछ पार्ट भी अगर करते हो तो भी आपको ओवरऑल परसेंटाइल तो क्लियर हो ही जाएगा, और रिस्क भी नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप पूरा कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ पूरा हो गया है भाई, क्योंकि वो सब चीजें फिट हो जाती हैं। तो ट्राई करो कि हो जाए, बट अगर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट समथिंग इन दैट। ओके तो सेम चीज मैं अपने क्लासेस में ही बता रहा हूँ आजकल कि LRDI कैसे करना है, तो दोज हु वांट टू लर्न सम ट्रिक्स एंड सब हैक्स, लाइक डायरेक्ट कैसे मार्क करना, लाइक कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, लेकिन सर पे आपको कैसे किस तरह से मैनेज करना है, यू कैन इजीली लाइक क्रैक वन और टू क्वेश्चन फ्रॉम द सेट विदाउट इवन सॉल्विंग द सेट, तो यू शुड नो हाउ टू, तो ये सब प्रैक्टिस से होगा, तो या प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज योर टेक अनिरुद्ध अबाउट LRDI? LRDI, as Bhumi You mentioned, are even it is a section where you need to have a good command over the language. Because इसमें like you need to see the questions as well. Sometimes the questions start with if, so आपको पहले ही idea लग जाता है that वो आपका जो भी सेट बनेगा वो incomplete होगा। अब उस पे ही आप अगर आधे घंटे से बैठे हो, आप देख रहे हो कि मेरा ये सेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, हाउ डू आई मूव अहेड विद क्वेश्चंस, तो वो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऑल्सो you need to be very good in language because of another reason, because sometimes the instructions can be quite tricky, as in cases बहुत बनते हैं, एंड व्हाट पीपल डू कि वो केसेस वाला सिनेरियो ही इग्नोर कर देते हैं। तो जहाँ पे वो केसेस से आंसर आएंगे उनका कुछ और आंसर आता है, and फिर उन्हें लगता है कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था ना, ये फिर यहाँ पे मेरा गलत कहाँ से आंसर है। तो इफ यू वांट टू बी गुड एट LRDI, you need to be good with of course your thinking, how the thinking process works, and of course कि
particularly क्या mentioned है question में and how do I need to interpret it? Because if something is there, they will clearly mention it. You don't need to assume anything while solving a set. जो जैसा instruction दिया है उसको particularly वैसे ही solve करो. Everything which needs to be taken care वो सब mentioned होगा. You don't need to apply your own common sense कि यार ये तो ऐसे ही होना चाहिए. ओके, तो ये गाइस सब कुछ सेट में ही रहता है वहाँ पे गिवन, बस आपको चुराना आना चाहिए। एंड बाकी तो अब एक और मीथ है कि लाइक हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई सॉल्व इन LRDI सो दैट स्कोर अ गुड परसेंटाइल। तो या इसके लिए आप मैं लोग की क्या स्ट्रेटजी थी? यहाँ नहीं, मैं एक LRDI पे ये बात बोलूंगा कि LRDI इज मोर अबाउट प्रैक्टिस एंड कमांड ओवर द लैंग्वेज एज मेंशन बाय 2 मेंटर्स। ठीक है, बट LRDI इज मोर अबाउट, मतलब आज तक कैट में कभी कोई भी कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं हुआ है LRDI में। हाँ, टॉपिक्स हैं, वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, बट आज तक एक भी सेट रिपीट नहीं हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो LRDI में मेरे मेंटर जो बोलते थे इज कि आपको पता होना चाहिए कि आपका LRDI का एक्चुअल सिलेबस क्या है, विच यू विल नो आफ्टर सॉल्विंग ओनली कैट सेट्स, जो आपको कैट एग्जाम में सेट्स आती है। ठीक है, तो आपको मतलब इनिशियल स्टेज में जिसका अभी स्टार्ट हो रहा है या जो अभी तक प्रैक्टिस करके आ चुका है, उसका पहला टेक यही होना चाहिए कि एज मेंशन बाय सुमित सर, कि पास्ट ईयर्स के LRDI के सेट्स को सॉल्व करें। ठीक है, तभी उसको पता चलेगा कि एक्चुअल एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है। एंड देन आपका टेक होना चाहिए कि कितना कौन सा सेक्शन में मूव करना चाहिए। तो फिर आप उसको एक्सप्लोर भी कर पाएंगे और तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो रेलिवेंट मटेरियल है भी या नहीं। एंड उसके बाद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो honestly speaking, that you should definitely target 10 questions minimum to score 99 plus percentile। ठीक है, आप अगर 8 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो तो यस, आपका 97 98 तक पहुंच जाएगा परसेंटाइल। लेकिन हाँ, अगर आप 10 क्वेश्चंस सॉल्व करते हो मिनिमम 2 सेट्स, आपको और 2 सेट्स ऐसा, ये एस मेंशन बाय भूमि कि 2 सेट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट 100% कंप्लीट सॉल्व हो रहा हो। चार चार सेट्स आने वाली है आपके एग्जाम में, 4 सेट में से 10 क्वेश्चन आपको निकालना है। सो दैट शुड बी योर टारगेट। और वो अभी से आपको माइंड में सेट करके चलना पड़ेगा कि हाँ, इन डेट एग्जाम जब मैं बैठूंगा तब वहां पे मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो माइंडसेट से आपको मॉक भी देना है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन यू शुड टारगेट। So I use a different strategy because LRDI is placed between VARC and fonts. Whatever we do in let's say LRDI has a disproportionate effect on fonts because font comes right after LRDI. If we make it like if we solve it all, if we perform very well in LRDI or we have the feeling that we have performed very well, then QA will go very well. But if by chance, if just let's say God forbid, you sit in the LRDI exam and you were not able to reach your target, let's say you were only able to solve 5 questions, then your quant will surely take a hit, and you will not be able to avoid that in the pressure of the CAT exam. So my strategy was, I only in the starting of when I started taking mocks, I only had the aim of solving one set in the whole 40 minutes. I had to improve on, let's say, how I select the sets. There are 4 sets, you don't have to solve all of them. You just have to tread very wisely and select the one set. In the exam, you have to select the 2 sets that you have to solve. And for that, you have to improve your judgment, your selection. So start for, let's say, for the first 10 mocks, or let's say for the first 5-7 mocks, you have to pick up that one set, develop your judgment. And when you have developed that, start aiming for that, start trying to do that first set within 15-20 minutes, and then jump onto the second set. If you do it, it is very well. If you don't do it, then by acing your quant section, after that, you can still get 99 percentile plus. एंड ऑल्सो वन थिंग, क्योंकि DILR के अंदर 4 सेट्स आते हैं, तो 1 सेट विल बी इजी एंड अदर 2 सेट्स आर लाइक मीडियम रेंज एंड 1 सेट विल बी डिफिकल्ट। तो वो आपको जज करना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि हर हर इंसान के लिए हर सेट डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। तो आपका कहाँ ज्यादा वीक है, कहाँ ज्यादा स्ट्रेंथ है, उस पर ध्यान देके जो सेट आपको इजी लगता है उसको पहले पिक करना है। वो तो आप मॉक दोगे और जो क्लासेस वगैरह अटेंड करोगे उससे समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या वीक है और क्या स्ट्रॉन्ग है। Yeah, agree to this, Bhumi and others. So adding to the point in sum up, like सिंपल सी बात है यार, LRDI सेक्शन है। मैं थोड़ा सा मतलब इफ यू सीन इन माय सेशंस व्हिच आई टुक ऑलरेडी रिलेटेड टू LRDI, तो मैं तो सबसे पहले ये मतलब यही मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले जाओ, invest your 5 minutes, choose a set. Once you find the easy one, like easy one means you are comfortable with the set. It doesn't mean कि छोटा दिख रहा है तो मैं तो कर लूंगा।
छोटा दिख रहा है, वही छोटा पैकेट बड़ा धमाका रहता है ना, वैसे ही हो जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट वही करवाएगा। सो यू शुड फाइंड द सेट विच is easier to you. You can easily handle. Like in 2023 also in first slot, there was a set mean mode median. People find it difficult because they don't have idea about a mean mode median. So, but I found it very easy. So it's all depends on the people. आपके अगर उस चीज़ के रिलेटेड नॉलेज है तो नॉलेज कैसे बढ़ेगा? The only option is more practice. The first thing. Second thing, command on your language. अगर आप उससे सही पता नहीं कर रहा है, टू द लेफ्ट बोला है तो आप उसको टू द लेफ्ट समझ के अपने लेफ्ट में बैठा रहे हो तो अच्छी बात है। बट यू ऑल्सो सी दे आर फेसिंग नॉर्थ और साउथ, अगर साउथ फेस करो तो आप तो गलत कर दिए। तो दीज आर द थिंग यू शुड टेक केयर, तभी आप सही कर पाओगे। एंड माई स्टडी इज डिफरेंट। व्हाट आई रिकमेंड टू द स्टूडेंट, फोकस ऑन द फर्स्ट सेट, दैट्स इट। एक सेट आपने क्लियर किया, यू हैव क्लियर्ड योर सेक्शनल कट ऑफ, दैट्स इट। उसके बाद जो टाइम है, चलो भाई अब तो 3 सेट है, टाइम बहुत है, जो भी टाइम आपके पास है। एंड नो मैटर, किसी के पास 30 मिनट हो सकता है, किसी के पास 10 मिनट हो सकता है। ट्राई टू गेट सम क्वेश्चन सॉल्व फ्रॉम दो सेट्स, एटलीस्ट 1 और 2। एंड आई थिंक इजीली 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकाल सकते हो आप इन 10 मिनट्स ऑल्सो। तो 10 should be your target, but how to achieve the target? The first thing you should follow, focus on clearing your sectional cutoff, because अगर वो मिस कर गए तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड। एंड सम अप जो इनका सब पे एक ही मिलता है, फोकस ऑन योर वर्बल पार्ट ऑल्सो एंड सॉल्व लॉट्स ऑफ सेट्स, सो दैट आगे जाके दिक्कत ना हो। पास्ट ईयर तो मस्ट है यार, वो तो करना ही चाहिए सबको। तो दिस इज व्हाट अबाउट LRDI। एंड आई थिंक 175 days is more than enough. So if they practice daily 3 set, it is enough I think. What is your take? 3 set या फिर ज़्यादा करना चाहिए? मैं तो 2-3 ही कहता हूँ। It is enough. But the 3 sets have to be of high quality. You have to get them from good mock websites. Yeah, there is a quality. Remember guys, quality matter. कैट लेवल सेट्स हैं, ऐसा नहीं 3 सेट बोले तो आप जा रहे हो तो गवर्नमेंट एग्जाम को सबसे इजी वाला सेट 3 सेट कर लिया, अब तो मैं कैट फोड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो दिस शुड नॉट बी योर स्ट्रेटेजी। तो क्वालिटी ऑफ सेट्स मैटर। एंड जिससे सेट्स नहीं मिल रहा है, प्रेपबी में हम ऑलरेडी डेली सेट्स शेयर कर रहे हैं, यू कैन गो एंड चेक दो सेट्स, वही सॉल्व कर लो। पास्ट ईयर पेपर उठाओ, पास्ट ईयर मॉक्स उठाओ, एनरोल इनटू मॉक्स, अटेम्प्ट द मॉक्स, दैट्स इट। दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर LRDI। इससे ज़्यादा तो आई थिंक कुछ लगता नहीं है। कोई है जिसने कुछ और किया हो, लाइक यू गाइस हैव डिड एनीथिंग एल्स? मेरा तो ऐसा था कि पूरे साल, इवन आई अटेम्प्टेड केट फॉर 2 टाइम्स, 2021 में दिया था, उसके बाद 2023 में। तो मेरा ऐसा था कि वो दिन में कोई भी काम हो, कोई भी फंक्शन हो, इवन कुछ भी हो, मिनिमम 2 सेट्स करना ही है। मिनिमम टू ओके, सेट्स, वो कोई भी एक टाइम में बैठ के टाइम सेट करके। और ये नहीं कि सेट्स करते टाइम में, मतलब मेरा इनिशियल इनिशियल मूवमेंट ये था कि मैं 15 मिनट टाइम सेट करता था और 15 मिनट में ट्राई करता था कि वो सेट सॉल्व कर, ठीक है। और धीरे धीरे वो 15 मिनट को 12 मिनट किया, 12 मिनट को 10 मिनट कर दिया, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजी यूज करके, और मिनिमम 2 सेट्स एट एनी कॉस्ट। और अगर टाइम ज्यादा है तो 3 सेट्स, यस आई, यू कैन डू इट। बट हाँ, मिनिमम 2 सेट्स आप खाइए पीजिए मत, खाइए सोइए मत सोइए, लेकिन हाँ मिनिमम 2 सेट्स आप कीजिए दिन में, तभी आपका DLR सेक्शन में 100% कमांड बैठेगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल कि लाइक नेगेटिव मार्किंग को प्लीज इग्नोर करें, कि अगर आपको कंफर्म है कि हाँ भाई वही है तो ही उसको मार्क करें, अदरवाइज नहीं करें। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, नॉलेज तो बहुत होती है लेकिन बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग उनका जो कमाया होता है वो सब चला जाता है। तो उसको नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी अपने बहुत सारे फ्रेंड्स देखे हैं जिनको आता था, मुझसे भी ज्यादा आता था, लेकिन फिर भी उनका नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया। तो इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे आता है मैं करूंगा ये वगैरह। जितना आता है उतना ही करें, स्किप नेगेटिव मार्किंग। ओके, सो एट दिस पॉइंट ऑल्सो ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, बच के खेलना है। एंड दिस शुड बी स्ट्रेटेजी, इवन द कॉन्ट में भी ऐसे ही करना, ओवर अटेम्प्ट नहीं। इफ यू हैव अ डाउट, सिंपली स्किप द क्वेश्चन, नो नीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन कि चलो तुक्के पे लगा लेता हूँ, तो तुक्के पे शायद कट ऑफ भी ना निकले। हो सकता है तुक्के पे 99 आ जाए, बट कुछ भी हो सकता है, देयर इज टू पॉसिबिलिटी। तो रिस्क लेने का नहीं, ठीक है। कमिंग टू द VRC, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी वीक इन VRC, सो मैं कुछ नहीं रिकमेंड करूँगा। मतलब वीक ऐसा है, आई वॉज अ गुड व्हेन आई अटेम्प्ट मॉक्स एंड ऑल, बट एट द पेपर
actual paper, I am not able to command those things. So I am not going to comment anything on VRC. और जिससे देखना है कि कैसे VRC अटेम्प्ट करते हैं कि इतना बर्बाद है इनका VRC. तो डेफिनेटली इन कमिंग मंथ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट लाइव VRC. शायद हो सकता है मैं बहुत खराब परफॉर्म करूं और शायद हो सकता है मैं बहुत अच्छा भी कर जाऊं. तो इट्स ऑल डिपेंड. तो नो कमेंट्स. व्हाट इज योर टेक अनिरुद्ध on VRC? Yeah, VRC में ना one suggestion which everyone gives is try to read. बट वो है ना, रीड क्या करना है कैसे करना है वो किसको नहीं पता. लाइक आई यूज्ड टू रीड 2 न्यूज़पेपर्स अ डे, तो वो बहुत सारा कंटेंट हो जाता था. while reading such things now you need to learn ki how to skim the unnecessary portions and how to retain a little useful information जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काम आए आपको. लाइक इफ आप 4 RC करने होते हैं प्लस देर आर अदर क्वेश्चंस VA के, अब उसमें देर आर लॉट्स ऑफ कंटेंट्स, 4 to 5 पैराग्राफ्स हैं. अब उसमें यू आर रीडिंग इट एंड यू आर जस्ट रीडिंग इट ना रिटेन हो रहा है ना समझ आ रहा है. सो ट्राई टू रीड फ्रॉम अ डिफरेंट वेरिड सोर्सेज सो दैट आपका कोई किसी भी एरिया से आपको RC है तो यू आर कंफर्टेबल इन दैट and try to read it in such a way that you are able to avoid the unnecessary information while retaining या तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या फिर आपको इतना पता हो कि क्वेश्चन में अगर ये पर्टिकुलर मुझसे पूछा है तो ये मेरे को इस पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा. वो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा. रीडिंग इसीलिए सब बोलते हैं कि इट विल हेल्प यू एंड VA में भी रीडिंग विल हेल्प यू बिकॉज इफ आपको सपोज करो पैरा समरी चाहिए तो समरी में यू नीड टू eliminate the unnecessary options or options which are quite generic or which are too exaggerating the situation. So उसमें आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. तो VRC the only tip I can give is read a lot and solve a lot. एंड उसमें भी ट्राई टू फाइंड आउट कि आपकी मिस्टेक्स क्या हुई हैं. इफ ये पर्टिकुलर ऑप्शन सही था तो आपकी और पेपर सेटर की दोनों की रीजनिंग सही थी या नहीं. What is you say Bhumi about VRC? सो लाइक मेरी स्ट्रैटेजी कुछ अलग थी. स्टार्टिंग में मैंने जो अनिरुद्ध ने बोला वही किया था कि कुछ कुछ जो मेन मेन चीजें उनको रीड करने की कोशिश करो और जो अननेसेसरी थिंग्स है उनको स्किप कर दो या फिर स्किम जो भी है. बट वो मेरा वर्क नहीं किया. मैंने एंड के 1 या 1.5 मंथ्स में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी क्योंकि मेरे मार्क्स में स्कोर एट द उस टाइम पे तो बहुत अच्छा आ रहा था जब मैंने मार्क्स स्टार्ट किए थे उस स्ट्रैटेजी को यूज करके. लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम मेरा मार्क्स उसमें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गया था. लाइक इट वाज लेस देन 10 आउट ऑफ 72. तो मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि यार ये क्या हो रहा है. तो उस टाइम में मैंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी और पूरा जो पैसेज है उसको पढ़ना स्टार्ट करा. लाइक 2.5 to 3 मिनट में पूरा पैसेज पहले रीड करना है. देन उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने क्योंकि मैंने एक्चुअली CL के मॉक्स परचेज किए थे. तो वहाँ पे एक सर है इंग्लिश के, जीजो सर. उन्होंने मतलब बताया था कि ऐसा क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली फ्रेम होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए. और जो ऐसा RC है वो डेफिनेटली किसी बंदे का लिखा हुआ है या कोई आर्टिकल है, किसी की स्पीच है, रिपोर्ट है, ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बनाया गया, वो नॉर्मल चीज है. बट क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली कंफ्यूज करने के लिए ही बनाए गए हैं. तो पहले उनको पढ़ना जो इविल है और फिर उसको पढ़ना जो नॉर्मल था, तो आपके लिए गलत चीज है. पहले उसको पढ़ो जो नॉर्मल है, देन आप उसको सॉल्व कर पाओगे. तो एंड मैंने स्ट्रेटजी चेंज की जो कि मैंने एग्जाम में भी फॉलो की थी कि RC पहले एंड देन क्वेश्चन, जिससे कि मुझे फायदा भी मिला था. एंड 4 RCs में से कौन सा RC आप पिक कर सकते हो उसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा वाइड रीडिंग करोगे उतने टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. क्योंकि पहले क्या होता था जब इनिशियल कैट स्टार्ट हुआ था तो जो आर्ट्स आते थे वो स्टार्टिंग से आते थे. लाइक इंट्रोडक्शन देंगे इस टॉपिक के बारे में, देन कुछ बोलेंगे. लेकिन जो आजकल आर्ट्स आते हैं वो मिड ऑफ द आर्टिकल आ जाते हैं, कहीं से भी स्टार्ट. अब आपको जब उसका इनिशियल ही नहीं पता तो आप बीच का कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे. तो टॉपिक की मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है जो कि आपको रीडिंग से पता चलेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो BA है वो भी रीडिंग से इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि आपको पता चलने लगता है कि सेंटेंस कैसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स. Okay. So basically सबके अलग अलग स्ट्रेटेजीज है VRC में. बट या द थिंग इज रीडिंग इज इम्पोर्टेंट अभी के लिए. तो सेकेंड यू शुड मेक अ गुड स्ट्रेटेजी. ऐसा नहीं है कि भूमि ने किया अनिरुद्ध ने किया तो वो सत्या के इसमें भी वही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो हो जाए. हो सकता है आपकी कुछ अलग स्ट्रेटेजी हो. तो यू शुड स्टार्ट टेकिंग सेक्शनल्स एंड मॉक्स सो दैट यू शुड मेक योर ओन स्ट्रेटेजी. व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी गाइस, सत्या एंड मयंक? So VARC, let's say, was one of my strong suits from the start. Before CAT, I was preparing for bank exams. Even then, VARC was one of my, in fact, English was one of my best sections. Maybe because I like reading, let's say, a lot. I used to like reading as a child too. But when I gave mocks for the first time, I used to do well in classes. But when I gave mocks for the first time,
I was really appalled, or let's say really shocked by how I performed in the VARC section, because it was abhorrent. It was very, very bad. So what I found was that in CAT, it is not about being a very deep reader or a very deep thinker or a philosopher. It is, the thing is, you have to do it within the specific time. So what I started doing was, I used to do time bound reading. You just set up your clock and start reading stuff and try to get an idea of things. But this has to be only the thing of a week. Then you go to the GMAT website. It's called GMAT Club. Pick up passages from there. It is in 3 levels: 500, 600, and 700. Start from the 500 level. Pick up 4 passages that are cat-like. They all have to have 4 questions. Pick it up, make a PowerPoint presentation out of it, and then start solving it. You have to, let's say, write all the question numbers on a piece of paper and highlight the keywords. Some questions can be like, which of the following is not denying the given fact? So in essence, it is, say, the question is asking, which of the following is accepting the fact? You have to write it down what the question is asking, and then start reading it, like read the passage very quickly, skim through it. You have to get an idea of where the things are. Now, to do all this, you have to get into practice, and in the start, you are not going to score well. You have to do this daily. I used to do this daily, no matter what happened. Even if I had college, I had to go to college, run to college. I had to do all things in the world. I never left English. So you have to focus on this. And after 15 days, you will become a master of VARC. That is without a doubt. Talking about my strategy, so VARC is one of the section which I find most difficult section for me. And the one was, I'm very interested in mathematics, but English was weak for me. तो 2021 में क्या हुआ था, जब मैंने कैट अटेम्प्ट किया था, तो आई गॉट लॉट्स ऑफ नॉलेज कि आपको पढ़ना चाहिए एंड आई स्टार्ट रीडिंग द थिंग्स फ्रॉम हिंदू, फ्रॉम द टाइम्स, फिर आपके इकोनॉमिक टाइम्स से, एओन से. बट द प्रॉब्लम इज मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था. आई जस्ट यूज टू रीड द स्टेटमेंट्स. ठीक है कि सबने बोला है कि पढ़ो आपका ठीक हो जाएगा, सो आई यूज टू रीड द स्टेटमेंट, बट अल्टीमेटली इट डोंट इवन हेल्प मी. I got very less percentile, worse percentile in the VARC sections only. ठीक है, फिर जब मैंने 2023 के लिए प्रिपेयर करने स्टार्ट करा, then I got to know कि आप जो भी पढ़ो वो कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए. Until अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो you are not going to score in the mocks, not even in the CAT. ठीक है, वो कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग कि जब क्वेश्चंस पे आओ, जैसे आपको, मैं भी वही सेम स्ट्रेटेजी यूज करता था. मैं भी जीजो सर के क्लासेस देखता था एंड आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन एकेडमी एक्चुअली. तो वहाँ पे क्या होता था कि आई यूज टू रीड द एंटायर पैसेज पढ़ने के बाद आपको जो भी समझ में आ वो तो इजीली समझ में आ जाएगा इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज. बट पीआरजी में क्या होता है, यू शुड अंडरस्टैंड क्वेश्चंस ऑल्सो. क्वेश्चंस इस तरीके से बनाए होते हैं कि कभी कभार उसमें फॉल्स पूछा रहता है, हम ट्रू सर्च करते हैं, उसमें नॉट गिवन इन द पैसेज, और हम आंसर गिवन का पूछते हैं. तो पीआरसी इज द सेक्शन जहां आपको हड़बड़ा के सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आपको पता ही नहीं है आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है. क्वांट्स में आपको पता है आंसर आया तो सही है, नहीं आया तो गलत है. डीएलआर में आपका आंसर आया तो सही है, नहीं आया तो गलत है. लेकिन बीआरसी से सेक्शन जो आप जो कर रहे हो आपको हमेशा लगेगा कि आप सही ही कर रहे हो. ठीक है, तो उस जगह पे आपको वर्क करना है कि हाँ आप करेक्ट होने चाहिए, और उसके लिए आपको पैसेज समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. तो रीड, अंडरस्टैंडिंग द लाइंस टेक 20 मिनट, 30 मिनट्स, 40 मिनट टू रीड इनिशियली. बट हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा उसको समझने के लिए. सिर्फ पढ़ के पार हो जाने से वो कभी हेल्प नहीं करने वाला है. I would like to add to that. For, let's say, many people are not very comfortable in reading, and the types of passages that are coming in CAT nowadays, I'd say most of the people are not comfortable in reading. And you have to become comfortable in it. You have to, let's say, even if there is a humorous line, you have to understand the humor. You have to get into that language. And for that, you have to read the sources. For example, in my paper, there was one article from Steven Pinker, which was published in The Guardian. And luckily, I was very fond of Steven Pinker's work, and I, let's say, identified it, and I knew what the whole passage is going to be about when I read the first paragraph. You have to, let's say, broaden your base like this. So I used to read things like Atlantic, NYT, Guardian, Aeon, Smithsonian, Scientific American, and Psychology Today. These are 7 newspapers. I used to read 2 articles out of each of them one day of the week. And this, let's say, helped me a lot in, let's say, becoming more familiar with the CAT language. And in paper solving, what I used to do was, I used to, let's say, as I said, I used to make a map of all the questions. There are 24 questions. You have to read, let's say, first you have 20 minutes. You have to go through all the passages that you can and solve the easiest questions. Each passage has 1 or 2 easy questions.
You have to first solve them, jump to VA for the next 10 minutes, then you will have 10 minutes left. Decide which one could you do better. Now you have seen all the questions. Can you do the difficult VA questions or can you do the difficult RC questions? Go back to that, do 4 or 5 questions in that time, or let's say even 3 questions. Like this, you will have almost 10 to 13 questions under your belt, which is a very good, let's say, score. Okay. Also, there is a question कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए. It's a very basic question. Each year, there are lots of students will ask कि sir 24 questions है, तो मुझे कितना अटेम्प्ट करना चाहिए? Should I attempt at 10? Should I attempt at 12? It is a very specific question in in VR से सबका ये डाउट रहता है कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए. What is your take? So I was very comfortable in it, and so I used to, let's say, attempt a lot of questions because I felt that it was let's say my forte. Okay, what is your attempt? So actually, I used to attempt 18 to 20 questions, out of which the whole thing after the right ones minus the negative ones, I got a score of 39 in English. So it was let's say a good score in that year, my CAT 23. Okay, that's very good score. Yes, so Yeah. I was, let's say, very comfortable in that. I used to, but if somebody is not comfortable in English and he thinks that he could ace maths, then don't do it. Don't attempt many VRC questions, it will ruin your score. If you are very strong in English, only then go ahead and attempt 17, 18 questions, or else only attempt the things that you can be sure of. So मतलब जब मैं मॉक्स देती थी when I used to give mocks, तो मेरा आरसी सेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू बीए. लेकिन जब एग्जाम हुआ तो उसमें आरसी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा टफ लगे थे. मेरा स्लॉट थ्री था, बाकी लोगों को काफी इजी लगे थे. आई डोंट नो मुझे क्यों टफ लगे थे वो. इस रिस्पेक्ट में मैंने इतनी रीडिंग की थी फिर भी. पर लेकिन उस टाइम पे बीए ने मुझको सेव किया. तो आई वांट टू टेल कि डोंट अंडर एस्टिमेट एनी सेक्शन वेदर इट इज बीए और आरसी, क्योंकि आपको नहीं पता, यू कैन नेवर नो कि एग्जाम में क्या चीज आपको इजी लगने वाला है. तो जो भी है मेरा 8 में से 3-4 भी सही नहीं जाते थे, वहां मेरे 6 सही थे. तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा चीज फ्लिप हो जाती है कि आपको लगता है कि जो आपको इजी है वो टफ हो जाता है, टफ है वो इजी. तो सब कुछ प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और एक चीज पे स्टे रहना सही नहीं होता. Okay, so there is one more question. It was from my side. अगर किसी का VR section खराब है, okay, and खराब means they don't have a good accuracy in the VRC. What should they do? They should attempt more questions, or they should focus on attempting a very specific or correct one. Correct one तो पता नहीं चलता है, सबको ही पता है. I had this problem actually initially that my accuracy used to be around 50% or 60%, and उस टाइम पे ना मैं पूरा VRC section करता था कि accuracy 50-60% है, high score आ जाएगा. But then I moved on to high accuracy. So basically, if you have low accuracy, try to work out on points that why you are getting the low accuracy. Like if particular कोई question गलत हुआ है, तो उसी category के questions गलत हो रहे हैं या सिर्फ उसी में हुआ था. Basically try to find out कि आपकी reasoning क्या है and how is it different from the actual answer. The moment you will crack it that where you are getting this particular option wrong ना, वहां से आपका accuracy improve होने लग जाएगा. So if you are suffering with low accuracy or anyone who is suffering with low accuracy, try to find out कि आपने क्या reasoning use करी थी गलत questions में, and सही questions में भी आपने क्या reasoning use करी थी. अगर सही वाली match हो रही है तो उस पर आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. गलत वाले पे तो आपको ऑब्वियसली देखना है, एंड सही वाले में भी आप कंफर्म करो कि आपकी और जो भी आपने जिनकी टेस्ट सीरीज ली है या कुछ भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो दोनों की सेम रीजनिंग है तो यू आर वेल टू गो. अगर डिफरेंट रीजनिंग है तो यू नीड टू वर्क ऑन इट बिकॉज वो एक बार ही काम कर जाएगा बट बार बार वो नहीं काम करेगा. Yeah, so then as Anirudh mentioned that आपको मतलब मेरा टेक ये था कि when I was scoring low in my mocks and other things, so मैं आरसी पे ज्यादा फोकस करता था. ये मेरे लिए वर्क करा है, नॉट नेसेसरी बाकी किसी के लिए ये वर्क करे, क्योंकि अगर आप पीजेस देखें जो पेरा जंबल्स होते हैं, वो अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो पेरा जंबल्स करेक्ट होने का चांसेस बहुत 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 लो होता है. ठीक है, हाँ, हालांकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट स्टिल दैट इज वन ऑफ द रिस्कियर सेक्शन. ठीक है, सो मैं टेक लेता था अपने आरसीस पे और उस पे मेहनत करके उस पे एक्यूरेसी हाई करने की कोशिश करता था. तो आप अपना एक डिपार्टमेंट बनाइए, आप अपना एक सेक्शन चूज कीजिए जहां आपको लगता है कि हाँ आप वहाँ परफॉर्म कर पाएंगे, और उस पे मेहनत कीजिए. आप टाइम देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली विद द टाइम वो चीज ठीक हो जाएगा.
ठीक है, बट विद द प्रॉपर स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी मस्ट नीडेड, एंड एज मेंशन बाय अनिरुद्ध कि आपको मॉक्स का एनालिसिस और मॉक्स के रीजनिंग से आपका रीजनिंग मैच होना चाहिए. इन केस योर रीजनिंग इज नॉट मैचिंग, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. या तो एक क्वेश्चन था जो इससे राइज हो रहा है, एज यू मेंशन अबाउट मॉक्स. ओके, सो एज ऑलरेडी वी सम अप एंड इन शॉर्ट वी में ये पता चला कि यू शुड मोर फोकस ऑन द रीडिंग पार्ट. यू शुड वर्क ऑन लाइक knowing the reasoning behind the correct और incorrect questions, बिकॉज करेक्ट भी हुआ तो क्यों हुआ वो आपको पता रहना चाहिए, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाओगे, ऐसा अनिरुद्ध एंड मयंक दोनों ने मेंशन किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड नो द करेक्ट स्ट्रेटेजी एंड द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, योर एक्यूरेसी, योर स्पीड, तो उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन वन. सिलेबस पहले करूँ या मॉक स्टार्ट करूँ? तो सिलेबस तो आई डोंट थिंक सो, मेरा तो कभी कंप्लीट हुआ है. आज भी अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे लगेगा कि मैं तो कुछ पढ़ के नहीं बैठा हूँ. व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस? सिलेबस पहले करना या मॉक स्टार्ट करना, या सिलेबस पहले करना फिर कैट देना फिर मॉक स्टार्ट करना? So syllabus complete karna can mean a lot of things. If you think that syllabus complete karna means doing LOD3 of all the things that are there, don't do that. But you have to complete the syllabus in a sense that you have to get an idea that what is there in let's say the book, what is there in the syllabus, what is there in the course, how many questions each thing brings. For example, there are I think 10 questions or 7 to 8 questions from arithmetic, 2 questions less from algebra. You have to get an idea of this and do proportional preparation of this. If let's say probability, you can just do let's say the basic questions, the basic let's say LOD level 1 or even something easier than that, because there are only 2 questions. You just have, if you see that a question for probability is very easy, you will attempt it. If it is very difficult, time consuming, you will leave it. So you have to prepare in that sense. You don't need to do LOD3 of all the things, but you certainly have to, let's say, make 1 or 2 things your forte. You have to work hard on 1 or 2 things, whichever ones you like. Okay. Oh, Start your what mocks from start your there is a mocks from question. July or August onwards. Yeah, July and August onwards. There is one more question, adding the same question. Like, what is the syllabus exactly? Syllabus होता क्या है वो बताओ, क्योंकि it is a myth. Syllabus मतलब 2-4 बुक कंप्लीट करना उसके बाद syllabus हो गया मेरा. What exactly syllabus is? So Anirudh, Mayank, what is your take? देखिए, बेसिकली सिलेबस का अगर मैं बात करूँ ना, तो नो, सबसे पहले अगर कोई अच्छा टीचर से आप पढ़ रहे हो तो वो सबसे पहले बोलेगा नो योर सिलेबस. ठीक है, और आपका सिलेबस आपको तभी पता चलेगा जब आप एक्चुअल कैट के पेपर लिखोगे. तो आप अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, तो आप पास्ट ईयर के 2 या 3 पेपर दो, आपको पता चल जाएगा कि कैट पूछना क्या चाहता है. ठीक है, देन यू विल फाइंड दैट व्हाट इज द रेलिवेंट. अब प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द सेक्शन जो कैट में लास्ट टाइम आया था. शायद स्लॉट 1 में एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, बट जनरली नहीं आता है. ठीक है, तो आपको इट्स नॉट लाइक कि इस स्लॉट में आ रहा है उस स्लॉट में नहीं आएगा, या लास्ट ईयर जो चीज आ गया वो अगले साल नहीं आएगा. टू नो योर सिलेबस एग्जैक्टली व्हाट कैट वांट्स, यू हैव टू अटेम्प्ट द कैट पेपर. ठीक है, तो आप पास्ट ईयर पेपर अटेम्प्ट करो, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल सिलेबस क्या है. नहीं तो बाकी वेबसाइट्स पे तो बहुत सारी सिलेबस पड़ी हुई ऑलरेडी. Also, I believe that people have this common notion that CAT का syllabus है, but apart from quants, VARC, LRDI का कोई ऐसा defined syllabus नहीं है. Quants में भी they have just stated some areas which will be tested, but again वो किस level पे test करेंगे या कुछ areas को mix करके भी test कर सकते हैं. For example, geometry and algebra they are often clubbed together. Algebra का तो almost हर किसी के साथ club कर देते हैं. एंड इफ यू लुक एट LRDI, तो LRDI में किसी भी तरह के सेट्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल मीन मीडियन मोड वाले जो सेट्स आए थे, आई बिलीव वो पिछले 5-6 ईयर्स में नहीं आए हुए हैं, तो अब यू कांट ब्लेम एनीवन कि वो 5-6 ईयर्स के सिलेबस में नहीं था. एंड एज मैं मेंशन दैट VRC में भी एक था, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट वाज फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आई गेस कैट 2022 में आया था. एंड उससे पहले भी इफ यू लुक एट द पास्ट 8 ईयर्स और 10 ईयर्स, उसमें वो टेस्ट ही नहीं हुआ था कंसेप्ट पूरा. And people were not sure that odd one out cat 23 में टेस्ट होगा या नहीं. तो there is no as such defined syllabus. They will just say that there are some areas which might be tested. To get an idea that what things will be tested, start with past year papers. And if you are sure, not sure कि syllabus complete करना है या mock देना,
तो ट्राई टू गिव अ मॉक, यू विल गेट एन आइडिया कि आप एक्चुअली में थिंग्स आपको समझ आएगी इफ यू विल मूव अहेड राइट नाउ इन दिस जर्नी, या यू नीड सम इम्प्रूवमेंट, थोड़ा बेसिक चाहिए। अगर इफ यू आर स्कोरिंग वेल, आपको चीजें समझ आ रही है तो ठीक है, यू कैन give a mock in 15 or 20 days. Otherwise, start with, as Bhumi said, after July or in August. Okay. I think the So first set of mocks, 2 or 3 mocks, should be given right now so that you can know what level you are at. And then 15 days down the line, or 20 days down the line, when you work hard and you then give another mock, then you will see how much growth you've had. So I would recommend everyone to give at least 1 mock or 2 mocks, because it will motivate you like nothing. Nothing else could motivate you than a bad mock score, scoring 14 percentile, getting a total score of 20 marks, something like that. And even I will suggest, also going to add the same point, and you already mentioned it. So yeah, guys, अभी भी अच्छा टाइम है, 1-2 मॉक तो अटेम्प्ट कर ही लो। मैं तो बोलता हूँ आज ही कर लो, इस सेशन के बाद जाओ, स्टार्ट अटेम्प्ट 1 मॉक, so and that you I should will know also suggest कि क्या है। कि सुमित भाई, आई विल सजेस्ट कि आप किसी इंस्टीट्यूट के मॉक अटेंड करने से अच्छा है 23 का पेपर उठाओ, 22 का पेपर उठाओ, या 21 का पेपर उठाओ। ये 3 साल में से कोई एक पेपर उठा के कर लो। वो आपको जो रुलाएगा, ठीक है, जो आंसू निकलेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि करना क्या है। ठीक है, तो आप ये 3 साल के मॉक्स को 3 मॉक में दे दो, एंड देन आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, एंड Okay. आई कैन सी दैट मॉक से रिलेटेड इसमें भी क्वेश्चंस है चैट में, सुमित जी आप आंसर कर दो एक बार। Yeah, Again, so like answering this, कि mocks और का, like everybody is saying give mocks and all. मॉक्स और में एक चीज और है, लाइक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी इज क्वाइट पर्सनलाइज्ड। लाइक मैंने अभी कुछ कहा, मयंक, भूमि एंड सत्या माइट नॉट अग्री विद इट, और दे विल कंप्लीटली अग्री विद। द बेस रिमेन सेम, सबका बेसिक सेम है, बट स्ट्रैटेजी को पर्सनलाइज करना होता है। पर्सनलाइज के लिए यू नीड टू एक्चुअली इवैल्यूएट योरसेल्फ, कि आप एक आधा मॉक दोगे तो ही आपको समझ आएगा कि यार वीए मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, आई कैन वर्क ऑन इट। आरसी मुझे स्ट्रगल कर रहा है, तो आई नीड टू रीड थिंग्स। इफ आप वो पहले से देख के नहीं रखोगे, इवेल्युएट नहीं करके रखोगे कि मुझे किस एरिया पे वर्क करना है, या दिस एरिया इज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर मी, सो आई कैन गो अ लिटिल लाइट ऑन इट, एंड बाकी एरियाज को मैं स्ट्रांग बना लूं, तो अनटिल एंड अनलेस आप ये सब नहीं इवेल्युएट करोगे, तो फिर आपकी प्रिपरेशन भी इतना आपको फ्रूटफुल नहीं लगेगी। And someone is asking like how many mocks should we give? So I want to tell कि मैंने approximately 40 to 42 mocks दिए थे other sectionals को हटा के। sectionals भी around 30 to 35 I think sectionals भी दिए थे। तो इतना तो कंपलसरी है ही, मिनिमम टू मिनिमम 40 तो आपको देने ही चाहिए, इससे आपको पता लगेगा कि एज अनिरुद्ध मेंशन कि स्ट्रेटेजी क्या है। okay, so मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूँगा। सॉरी, मिनिमम ऐसा कोई ऐसा देर इज नो नंबर। आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किए हो तो योर मिनिमम शुड बी अराउंड 40 मार्क्स। ओके, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे हो, लाइक यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन द मंथ ऑफ अगस्त और मे बी सितंबर, then your minimum should be depends on the time and the thing you know। आप अगर बेसिक आपको क्लियर ही नहीं है तो आप मॉक दे क्या है फायदा। यू शुड नो एटलीस्ट सम बेसिक्स, एंड इफ फिर भी अगर मिनिमम की बात करें तो देर वॉज 15 और 17 मार्क्स वॉज बी मिनिमम एट दैट टाइम, assuming you are not going to attempt a mock in an alternate day or a daily basis, like some people those who already done with is I'm audible? यस यस यू I'm आर। audible? यस। तो assuming like अगर किसी का सिलेबस हो चुका है, those who already preparing right now, और तब उन्होंने वो लोग जाके अगर वहाँ मॉक दे रहे, देन डिपेंड कि वो डेली अटेम्प्ट कर रहे हैं तो देयर मॉक्स नंबर ऑफ मॉक्स विल बी इंक्रीज। लाइक वी हैव उन्नत इन आवर मेंटर, ही अटेम्प्टेड 127 मॉक्स। तो डिपेंड करता है आप कब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कब मॉक दे रहे हैं। तो इट्स सब्जेक्ट टू क्वेश्चन, एंड टू बी ऑनेस्ट नंबर से मैटर नहीं करता है। it's all about how you're going to analyze, how you're going to get learning from them. It is the important thing. So number mat gino, learnings gino, and adding to the question same, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है which mock source should we go। तो guys मैं तो बोलूँगा PrepBee का मॉक्स ले लो, ठीक है, but yeah, apart from PrepBee what you can try, I yeah used guys। to solve 2 series. You have to basically get 2 series because one has to be totally cat level. It will give you all the cat level questions. And for that, I thought Career Launcher was the best. It had all the things which were cat like.
And the second has to be a bit experimental, where the paper setter doesn't even know what he's doing, something like that. Because when you get in front of experimental papers, there your adaptability improves. So for example, for this I used to give unacademy papers, and they were like random. They had nothing to do with CAT, some papers, but others were nice too. For example, in some papers of VARC, in one paper particularly, I remember, one RC had 8 questions and there were 2 RC of 4 questions. And in VA there were some weird things going on. So, but you have to do this to, let's say, improve your adaptability, because in CAT you don't know what exactly is going to come. There might be a basic thing that there will be 4 questions like this, but it is also possible that they will give you in DILR, they will give you 6 and 4 questions instead of 5. In VARC they might change something. The VA might appear first, some things like that. So I think this was my strategy. So actually my mock strategy was, so obviously get the PrepBee mocks, and that will be very relevant and very helpful to you. The second thing, what I used to do, what I did, with one of my friend, I purchased the CL mocks and IMS mocks along with him. He purchased the IMS mock, I purchased the CL mock, and I got 30 mocks from CL, and he got 30 mocks from IMS. What we did, we exchanged the mock. So I gave 15 marks from CL, 15 marks from IMS. That is Simcat actually. He gave 15 from CL from my account, and 15 Simcat. So what this will give now, because there are the who is setting the paper, like someone is setting the CL paper. So उनका mindset हमेशा एक रहेगा. ठीक है, वो एक तरीके से सोच के मॉक्स बनाएंगे, और वो आप नेसेसरी नहीं है कि केट में वो सिमिलर आ जाए. ठीक है, तो आपके पास हमेशा होना चाहिए कि 2 या 3 सोर्स से मॉक दो आप. और ये जैसे सत्या ने बताया कि एक्सपेरिमेंटल मॉक, आपका जितना इंस्टीट्यूट आपको फ्री में मॉक्स के अवेलेबल दे रहा है, ठीक है, आप टेंशन मत लो कि आपका स्कोर कितना बनने वाला है, क्या होने वाला है. जो भी इंस्टीट्यूट आपको फ्री में मॉक्स प्रोवाइड कर रहा है, जाओ बैठो टाइम पास के लिए दे. ठीक है, वहां आपको वो एक्सपेरिमेंट करने मिलेगा, वहां आपको जानने मिलेगा थोड़ा बहुत कि आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन सा है. सीरियसली आप 2 मॉक्स या 3 मॉक्स परचेज करो. ठीक है, या फिर अपने फ्रेंड के साथ जो मैंने स्ट्रेटेजी लगाई थी वो उस टाइप से परचेज करो, और वहां पे आप सीरियसली बैठ के मॉक दो और वहां पे एनालाइज करो. एंड गिविंग मॉक्स इज नॉट द मेन थिंग, हाउ यू आर एनालाइजिंग इट इज द मेन थिंग. ठीक है, सो इन द PrepBee ऑलरेडी लाइक दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मेंटर्स. सो वहां पे क्या होगा कि आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरिया क्या है. ठीक है, तो until and unless you are not analyzing the things properly, it is not going to help you. ठीक है, और ये डेफिनेटली होना चाहिए, आपसे कोई सीनियर होना चाहिए जो पहले से कैट अटेम्प्ट करके रखा हुआ है, जो आपको एनालाइज करके बताए कि आपका सेक्शन कौन सा है. ठीक है, सो यू शुड लाइक लुक टुवर्ड्स दैट. Okay. And what are the sources, Nirud and Bhumi, you are taken in the 2023 examination? Like I have prepared from same as Satya. Like I have taken coaching from an academy, so the mocks are readily available. And apart from that, I took CL mocks, which I found like very interesting. Like उसमें जो होता है कि अगर आप जो questions हैं उनके answers जो वीडियो explanation के थ्रू समझाए जाते थे. कुछ मॉक्स में, कुछ मॉक्स का रिटर्न होता था, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा ज्यादा सही लगा वो, कि अगर आपको कहीं भी आएगा तो भी आपका एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ में आ जाएगा. एंड नॉट ओनली द आंसर्स बट द ट्रिक्स दैट दे सॉल्व, that they used to solve to get the answers. तो आई थिंक मेरे को वो दो कोर्सेज ज्यादा अच्छे लगे थे उस टाइम पे. आई डोंट नो अबाउट PrepBee, आई थिंक नहीं था आई डोंट मॉक्स, लेकिन अगर वो लोग अब मॉक्स लॉन्च कर रहे हैं तो आप जाके देख सकते हो. डेफिनेटली न्यू माइंड्स है तो न्यू थॉट्स तो होंगे ही, तो उसको अगर आप देखते हो तो आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस. यस, मैं भी बोलूँगा PrepBee पे असल में हम लोग की इतनी वाइड कम्युनिटी है. हम लोग जैसे आपके सामने बस 4 ही बैठे हैं, बट ऐसे हम लोग की काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है जिसके अंदर हम लोग कई अच्छे कॉलेज से कन्वर्ट्स हैं, कई अच्छे परसेंटाइल वाले बंदे हैं, और सबकी अपनी कुछ तो अच्छी हैबिट्स हैं. जैसे मेरी रीडिंग की हैबिट है, मतलब मुझे एवरेज लगती है बट कुछ को अच्छी लगती होगी. कुछ लोगों की आदत होती है वो लोग सुडोकू सॉल्व करते रहते हैं. तो इस तरह से जब मॉक्स बनते हैं या फिर कुछ भी बनता है, जब उसमें इस तरह की कलेक्टिव विजडम जाती है, तो श्योरली आप लोग एक बार उसको देख सकते हैं. Okay. So yeah, so most of the people here sitting, they have gone through a CL mock. ठीक है, अब mock की बात ही हो रही है तो one more thing we like to introduce. As mentioned, Mayank, आपको पता चलना चाहिए आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपको mentoring मिलना चाहिए. That's what we are providing PrepBee. We are providing mentorship. So those who are interested, just visit prepbee.in or just check a description of this video if you are watching recording. आपको mocks, मतलब not a mocks, पहले तो आपको mentorship
मिल जाएगा वहाँ से. ओके, एंड ऑल्सो वी आर कमिंग विद गुड मॉक्स, तो वो भी चेक कर लेना. एंड देर आर लॉट्स ऑफ फ्री मॉक्स अवेलेबल, आप वो भी अटेम्प्ट कर लेना, क्या पता आपको पसंद आ जाए. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज वन मोर क्वेश्चन कि मुझे ऑफलाइन क्लास जाना चाहिए और सिर्फ मॉक सब्सक्रिप्शन इज इनफ फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स. तो व्हाट इज योर टेक गाइस? ना, आई विल सजेस्ट आपको क्लासेस लेना ही चाहिए, बिकॉज ए टीचर विल टीच यू कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. मॉक्स में आप सिर्फ ट्रेन करते हो खुद को, जो आप सीख चुके हो उसको टेस्ट करते हो. मॉक्स इज जस्ट टेस्टिंग, आप मॉक लेके सीख नहीं सकते. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई सेक्शन वीक है तो उसके लिए आपको प्रॉपर क्लासेस चाहिए. प्रॉपर क्लासेस लगाओ, जैसे मैंने भी अन अकेडमी से प्रिपरेशन करा हुआ है. ठीक है, तो आप प्रॉपर क्लासेस लगाओ, क्लासेस से आपको ट्रेनिंग मिलेगी और उसको आप मॉक्स में अप्लाई करोगे. ओनली टेकिंग मॉक इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी वे. And the question should not and the question should not be like the offline classes or just giving mocks. Classes must be like online, offline. It doesn't supposed to be there. Like आप लोग अपना सोच सकते हो कि ऑनलाइन लेनी है ऑफलाइन लेनी है, जरूरी नहीं कि ऑफलाइन ही लेनी है. मॉक्स तो एक अलग क्राइटेरिया, वो तो देना ही देना, उसके लिए तो कुछ चीज है ही नहीं. बट लेकिन क्लासेस की बात की जाए तो ऑफलाइन क्लासेस भी मस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है. ऑनलाइन भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, काफी ज्यादा कोचिंग्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन. जैसा कि आपको कंफर्टेबल हो वैसा आप ले सकते हैं. I think that online is much better than offline, but it is a personal choice. The answer depends on varies from person to person. Because when you go to an offline class, you sit there with your friends. Most of the time, many a times, if you are not concentrated, you are hooligans around. Most of the times in local coachings, you don't get recordings. So I think in online, you are focused. In offline classes, after the class, you will go around to the scooty stand or the bike stand. You will sit there talking with your friends. You will go around to take tea. So I think online is better in that sense. But yes, a class is necessary for most people. For example, the teacher that I used to study from, I think I can name them, right? So, yeah. Can I name the teacher? Yeah, you can. It is helpful So, to them. I used to study maths प्रेप from में हो Samir. आप ऐसे नहीं, देर इज नो काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन. आप जो बेस्ट सोर्स है आप बता सकते हो डेफिनेटली. So, I देर used इज to नो study रेस्ट्रिक्शन. fonts from Samir Sardana, sir. He was an excellent teacher. And the funny thing about him was that he used to give us assignments on Telegram groups. But if we won't send him if we don't solve it and send him a copy of the solutions, he will kick us out of the group. And when you ask him, sir, please add me back to the group, he will, let's say, hadkaufy you or let's say sarilofy you in front of the whole class. He will say that you are worthless, you won't take up, you won't qualify CAT, you are worth nothing. And it was the fear of that scolding that made us study and solve those assignments. So yes, classes are definitely necessary. I think everyone Yes. has faced the same issue. Yes, everybody भाई has faced the मेरे भी, wrath of Samir sir. I also studied from Samir sir, scored 98.66 percentile in quant section. And भाई सर का अगर टाइम पे काम करके नहीं तो बहुत डांट पड़ती थी. ठीक है, For वो for बहुत quant it डांट was पड़ती Samir थी. sir, for English it was Shabana ma'am, and the two were, let's say, I give the credit to the two for helping me qualify CAT in the other competitive exams, and I give credit to PrepBee for helping me qualify the interviews. चलो हम भी कुछ क्रेडिट ले लिए मतलब. यस, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट प्रेप भी. अगर प्रेप भी वो गाइड उस टाइम पे गाइडेंस नहीं देता तो फिर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता, वो बात है. सही हाँ, बात. इसे और एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि जो मेरे सर बोलते थे, एक्चुअली समीर सर हमेशा बताते थे कि कैट में एक्चुअली तीन चीज नहीं आती है, हमेशा चार चीज आती है. वीआरसी, आपका एलआरडीआई, क्वांट प्लस कॉन्फिडेंस. ठीक है, आपको एग्जाम में सिर्फ ये नहीं करके जाना है कि मैं पढ़ के चला गया तो मेरा मार्क्स आ ही जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा विथ लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, कि वहां पे आप बैठे हो तो आप श्योर हो माइंडसेट में कि जो भी क्वेश्चन है भाई हम तो सॉल्व करने के लिए बैठा है यहाँ पे, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा. ठीक है, तो वो चीज वो आपको माइंडसेट बना के पहले से रखना पड़ेगा और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा. या दैट्स ग्रेट. आई थिंक हमने मॉक के ऊपर बहुत अच्छे से गाइड कर दिया है. अनिरुद्ध कुछ कहना है इसमें, ऐड करना है लाइक एनीथिंग? यार उसमें 4 की जगह ना एक फिफ्थ एलिमेंट भी डाल दो, टाइम मैनेजमेंट. बिकॉज मेनी टाइम्स यू विल बी स्टक एट द सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शंस, एंड उसके बाद वाले सारे इजी क्वेश्चंस आप स्किप कर दोगे. तो एक टाइम मैनेजमेंट भी है ना, आप लेके चलना. इसीलिए अगर आप क्वेश्चंस वैसे भी सॉल्व करो
I believe Satya has given the advice already that and Mayank also that LRDA VARC या practice भी करो sectional या mocks में नहीं ऐसे ही आप practice करो तो भी timer लगा के करो. The more you'll be bound in a particular time range, the better you'll be able to prepare in actual exam as well as the mocks. तो थोड़ा सा time अच्छे से manage करके चलना. हाँ, और I अपने believe. ईगो को घर पे रख के जाना. वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन मैं क्यों नहीं कर सकता. ठीक है, ये तो मेरे रेंज का क्वेश्चन है. वो नहीं होना चाहिए. नहीं हो रहा है भाई, छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन में मूव करते हैं. ठीक है, तो ईगो को घर पे रख के जाना. इवन वाइल गिविंग मॉक्स, आपका ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन तो होना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट. नहीं हो रहा है, Basically, छोड़ो, मूव टू you द have नेक्स्ट to क्वेश्चन. you have to give mocks like you are giving the CAT exam, and you have to give the CAT exam like you're giving a mock without any tension. agree to this point, like ऐसे ही करना चाहिए. मॉक्स को ऐसे दो जैसे कैट दे रहे हो, एंड सो दैट आप जब कैट में जाओगे, इसलिए मैं कहता हूँ अभी से अगर आप मॉक्स दे रहे हो, एट दी एंड जाके एक टाइम आएगा जो आपको लगेगा कि कैट में भी आप बैठे होंगे, आपको लगेगा कि मॉक्स ही चल रहा है. ठीक है, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट्स. यार 20-25 मॉक दिया, फैमिलिटी में मिल जाती है कि इट इज सेम चीज है जो मैं 20 बार किया हूँ, आज एक और बार 21st टाइम ये यहाँ भी खत्म कर देते हैं. तो दिस इज द थिंग, दिस इज ऑल अबाउट मॉक्स एंड सीरीज. अब because you have 175 days, so as we mentioned, you have enough time. So from now onward, what you have to do, just for VRC, as Anirudh and Mayank, Satya and whom we mentioned, go for a reading, work on your question part, analyze it कि सही क्यों है, गलत क्यों है. ठीक है, एंड एडिंग टू द पॉइंट, मैं तो ऐसे बोलना नहीं चाहता VRC में, बट मैं बोलना चाहता हूँ रीडिंग और क्वेश्चन जैसे हम बोल रहे हैं. आई वुड सजेस्ट इफ समवन लाइक मी, अगर हम जैसे लोग रीडिंग में वर्सटाइल नहीं है, हमको पता है रीडिंग हम चालू कर दे वैसे ही नींद आ जाती है, तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट रीड RC एंड सॉल्व द क्वेश्चन. बात वही हो रही है, रीडिंग भी कर रहे हो आप, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहा है. यू कैन डू दिस. ठीक है, बट ऑन, चलो अभी तो कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन इट कम टू LRDI, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस यू नीड. जितने ज़्यादा हो सके सॉल्व करो, मॉक्स मॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो. सिमिलरली फॉर द QA, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दिस, जब बेसिक की बात आ रही है तो बेसिक एंड सिलेबस, तो देर इज नो ऐसा सिलेबस. आपको एक एरियाज बताया गया है, उसके ऊपर वर्क करो, नो द बेसिक, दैट्स इट. उसके ऊपर जितने क्वेश्चन उसे सॉल्व करो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, दैट्स इट. मॉक कब स्टार्ट करना है, कब नहीं होता है, अब होता है, अब स्टार्ट कर दो गाइस. कब मत पूछना, मॉक कब करना है नहीं, मॉक अब करना है ऐसे बोलना. ठीक है, तो अब अभी टाइम है, आज से स्टार्ट करो. जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब से स्टार्ट करना चालू कर दो. दैट्स इट, व्हाट इज दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. एंड रही बात एक्स्ट्रा थॉट्स की कि प्रिपेयर कैसे होना, कर पाऊंगा कि नहीं, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थॉट्स आई नो आपको आता ही होगा. यू कैन लुक फॉर आवर mentorship program, and Anirudh, Mayank, Satya, Bhumi, and there are lots of mentor. They all are there. They will guide you. So you can just visit prepbee.in and look for a mentorship program. Apart from these, one more thing I would like to add. We are going to take initiative. We have taken already initiative, and हम वहाँ पे पूरा का पूरा आपका कैट का सिलेबस फ्री में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं. वी हैव उन्नत, सत्या, नॉट सत्या, सुमित, लाइक मैं खुद हूँ सुमित. ओके, तो पूछना मत कौन सुमित. एंड थर्ड वन इज आर, लाइक नाम भूल गया मैं उसका, सक्षम, या. So he is going to take QA part. So we all are going to guide all the things. Apart from us, we have other mentors जो कि in coming days will take initiative and attempt the mock and guide you. So आपको और भी बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे. In soon we are going to come up with a session कि with CAT how you should prepare for OMETs, because OMETs also important. ठीक है, अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, बहुत लंबा लॉस हो सकता है. ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम एक सेशन लाएंगे जिसमें आपकी जो भी डाउट्स हो कि यार कैट तो चल रहा है, ओमेट्स कैसे, तो हम वहाँ क्लियर करेंगे. दिस इज व्हाट द ऑल अबाउट द सेशन इज. आई लाइक टू ऐड वन थिंग कि ये जो जैसे लास्ट 175 डेज अभी रह गया है, ठीक है, तो ये फर्स्ट 175 डेज इज नॉट लाइक दैट इट इज गोइंग टू मींस वर्क फॉर एवरी स्टूडेंट इन द सेम मैनर. आपके लिए अलग होने वाला है. तो आप उस टाइम पे कैसे मतलब वो खुद के लिए वर्क कर पा रहे हो ना, वो आप पे डिपेंड करता है. ठीक है,
तो इसके लिए आप क्या करो, आप ऑब्वियसली सुमित भैया को रीच करो, वो आपके लिए जो भी मेंटर असाइन करेंगे वो मेंटर आपको बता देगा कि कैसे आपको आपका सिलेबस बताना है। ठीक है, कैसे आपको आपकी स्ट्रेटेजी बनानी है, कब कब प्रिपेयर करना है, कब कब मॉक्स देना है, तो वो आपको आपका पर्सनल मेंटर हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ में ये चीज आपको भी विद प्रैक्टिस जाना पड़ेगा। ठीक है, और विद प्रॉपर गाइडेंस, जहां से भी लो लेकिन गाइडेंस सही रहता, भटकना नहीं है। ठीक है, बेसिकली वही बात। So yeah, this is our offerings. You can check and you can visit our website and check this. CAT preparation daily चल रहा है. Today we are going to launch this month schedule, जो हम इस महीने में करवाने वाले जून मंथ में. तो आप शेड्यूल भी ले सकते हो वहाँ से जाके and you can attend our CAT preparation model. This is a free for all. Apart from this, आप ये देख सकते हैं, if you want a personalized mentorship from all the peoples, we have a CAT mentors. So आप you can enroll into it any of the plan. This is what our offering is. There is lots of things here. You can just go through it, and it is available in our website also. So this is all about the session is, and I hope we tried to clear all the important questions and doubts. Guys, if I was missing some questions and do let me know so that we can cover those questions. I'd like to answer Soham Kohli's doubt, how to tackle anxiety. So basically, the human mind is designed to make you not work hard. It is an evolutionary trait. And what the mind does is whenever you know you have to work hard, the easiest thing for your brain to do is become depressed, become angry, come under anxiety. So you have time to lie down on your bed and rest. I'm no mental expert, but that is what I think, and that is how I motivate myself. Just get up and start working hard. You are anxious because you are not sure about your preparation. But once you are prepared, you have a knack of solving papers, an attitude will come in your mind. हो जाएगा, नहीं होगा तो sad हो जाएगा, नहीं होगा तो snap होगा, नहीं होगा तो nmat हो जाएगा. When that confidence comes, which will come with time if you work hard, the anxiety will go away on its own. Other than anxiety on the CAT day, that cannot be avoided. You have to give the CAT exam with a little bit of anxiety at the back of your head. Yeah, one more thing, same इसमें attitude is important. And लोकेश शर्मा सर, अगर अनअकैडमी पे आपने जानते हो उन्हें, वो भी कहते हैं एक पॉइंट कि लाइक आपको एक कॉलेज में जाना है. ठीक है, कॉलेज बहुत है, आपको एक कॉलेज चाहिए, तो फोकस ऑन दो दैट वन कॉलेज. मैटर नहीं करता कौन से एग्जाम से मिल रहा है, इसलिए फोकस सारे एग्जाम पे रहना चाहिए. आपको एक कॉलेज चाहिए लेकिन एग्जाम सारे देना है. दिस इज व्हाट लोकेश शर्मा सर कहते हैं. एंड इवन दो ट्रू भी है, आप लोग भी एक ही कॉलेज में हो, कन्वर्ट तो तीन चार के होंगे बट एट द एंड तो एक ही कॉलेज में जाना है. तो वी शुड फोकस ऑन दैट वन कॉलेज. So this is the session is, and thank you Anirudh, Mayank, Satya, and Bhumi for joining the session and trying to answer the questions. Like there is a myth, lots of myth की क्या होगा 175 days is enough or not, and you guys like अच्छे से आपने बता दिया कि 175 days is more than enough. ठीक है, अभी से करोगे आराम से कर पाओगे. एंड अगर फिर भी इसमें स्पेशलाइज आपको अच्छे से मेंटरशिप चाहिए इन लोगों से ही, लाइक आप देख सकते हैं मयंक, सत्या, भूमि, अनिरुद्ध सब बैठे ही है. These all are CAT mentors. Apart from them, there are other CAT mentors also. We have more than 50 plus mentors. So those are going to guide you all. आप देख सकते हैं हमारा mentorship plan. You can go and enroll into it. And जो भी आपको mentor मिले, they will guide you throughout your till the ZAT. ZAT के बाद तो फिर हम है ही PrepBee for your GDPI, and we will take care of your GDPI part. So thank you for the session, guys.